Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, you can see on the screen today we are going to solve the exercise of the chapter 1 of 11th Commerce, Book Keeping and Accountancy. आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 and 4 हम सॉल्व करेंगे and we will also discuss wherever applicable. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be useful to everybody out there. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. I'll just read out the question for you. Select the most appropriate alternatives given below from those I'm to say given below and rewrite the statements. ठीक है, ये रीराइट वाला हमने पहले भी डिस्कस किया है एंड आई हैव टोल्ड यू दैट अगर वो रीराइट कहते हैं देन यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द आंसर. ठीक है, सो फर्स्ट वन, surplus of income over expense is dash. Yes, the correct answer is profit. As you can see, I have highlighted for you. Surplus of income, expense से ज़्यादा अगर हमको ज़्यादा इनकम मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है. Second, in dash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. It is in the cash basis of accounting. The correct answer is C, that is cash basis. Third, amount which is not recoverable from customer is known as dash. Yes, it is known as bad debts. A is the right answer. Amount which is not recoverable at all, आपको वो मिलने ही नहीं वाले हैं, so from the customer, so definitely उसको हम bad debts कहते हैं. ठीक है. Fourth, accounts must be honestly prepared and they must disclose all the material information is known as dash. इस कंसेप्ट को हमने पहले भी अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में. द करेक्ट आंसर इज डिस्क्लोजर कंसेप्ट. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी. फिफ्थ, a commodity in which a trader deals is known as dash. Yes, the answer is A, goods. है ना, कौन से है वो कमोडिटी? उस कमोडिटी को हम क्या कहते हैं जो ट्रेडर डील करता है? ऑब्वियसली वो गुड्स ही होते हैं. सो द राइट आंसर इज गुड्स. लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन. डैश मीन्स अ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. ये रेप्यूटेशन इफ यू कैन रिकलेक्ट और गो इन द फ्लैश बैक, हमने ये वन लाइन क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था. व्हाट इज गुडविल, रिमेंबर? सो यहाँ पर भी पूछा गया है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गुडविल. इसको ही हम कहते हैं इट्स अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. सेवंथ, अकॉर्डिंग टू डैश कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं और बहुत सारे 10 तो हमने डिस्कस करे हैं. तो ऑब्वियसली दिस रिलेट्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज अकॉर्डिंग टू विच कैश फ्लो स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू accounting standard 3, cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. ठीक है. Eighth है हमारा, the immediate recognition of loss is supported by the principle of dash. Yes, it is the principle of conservatism. The correct answer is A. Ninth, brief explanation of an entry is called as narration. Yes, you can see I have highlighted it's B, narration. जब भी हम कोई भी जो एंट्री पास करते हैं नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को और कुछ नहीं हम नरेशन ही कहते हैं. ठीक है. 10th one, an act of exchange of things or services between the two parties is termed as transaction. Obviously कोई भी exchange of things and services होते हैं और वो दो लोगों के बीच में जब होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन. So the correct answer is C, transaction. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 4 गोज लाइक दिस. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस. यस, आपको रीजन प्रोवाइड करना है. ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम. द आंसर इज फॉल्स. इट इज नॉट राइट. आई एम टू से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज बुक कीपिंग इज डेफिनेटली लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग. जैसे मैंने यहाँ रीज़न दिया है. इट मतलब बुक कीपिंग. ओके, बुक कीपिंग आई जस्ट राइट हियर सो दैट इट विल हेल्प यू.
हमको यहाँ पे रीजन प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स. That's why bookkeeping is concerned with recording and classifying the business transactions. Recording, please understand, यहाँ पे recording की बात हो रही है. Okay, the main thing is, whereas accountancy is related with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting. देखो बहुत सारी चीज़ें, interpreting the financial data. Okay, so this is the reason you can see why the statement is false. Okay, so bookkeeping is the initial, आप बोल सकते हो, stage, primary stage, and accounting carries on. Okay, so bookkeeping basically recording है, classifying है, जो भी business transactions होते हैं, whereas accountancy is related with more than that little bit, you can say. Okay, advanced बोल सकते हो, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting. I am saying it again children, so that आपको reason clear हो जाए why the statement is false. ठीक है. Then second is conservatism means to follow safe side. Students, we have already studied this in when we were studying the concepts and all. First of all, the statement is true. Yes, the statement is true. Why it is true? Because ये conservatism जो concept है, ये बहुत safe play करता है. Because while recording the business transactions, we have to anticipate. ये textbook में दिया है, नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज. मतलब वो लॉसेज को प्रोविजन करता है, टेक्स केयर ऑफ द पॉसिबल लॉसेज एंड एंटिसिपेट नो प्रॉफिट. ठीक है. सो इट एनकरेजेस द सर्टन रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स, बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन्स टू प्रिवेंट लॉसेज. और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो शोज लोअर इनकम एंड बैलेंस शीट ओवर स्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडर स्टेट्स द असेट्स. सो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसीलिए होती है बिकॉज इट हेल्प्स द अकाउंटेंट्स, पब्लिक अकाउंटेंट्स को सेफ प्ले करने के लिए. सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. देन द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. यस, ये हमने डिस्कस किया था. द करेक्ट आंसर इज ट्रू, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स. डुअल इफेक्ट, दिस इज द कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट every debit के लिए, every debit there is a corresponding and equal credit. This is very important reason children. Okay, and this is the basis of the entire system of double entry bookkeeping. ठीक है. So that's why the statement is true. Fourth, bank overdraft is an asset of the business. बिल्कुल नहीं, the statement is wrong, false. Why it is false? Because bank overdraft is a facility given to the current account holder. Especially current account holder कौन होता है? बिजनेसमैन होता है, वही नहीं करंट अकाउंट ओपन करता है, राइट? तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है टू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट डिसाइडेड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. So it is a sort of temporary loan given by the bank to the current account holder. Hence, it's very important, it is a liability of the business. So that's why the statement is false. तो ये रीजन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. फिफ्थ की तरफ चलते हैं. सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज. डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज पीपल जज कंपनीज वर्किंग कैपिटल टू डिसाइड वेदर इट इज सॉल्वेंट और नॉट, है ना. अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो वो बोलते हैं कि हाँ कंपनी सॉल्वेंट है या द पर्सन इज सॉल्वेंट, the owner is solvent. So definitely as per the definition also it states the same that a solvent person is a person whose assets are more than liabilities. उनके जो current assets है वो ज़्यादा होते हैं liabilities से. So the statement is true. Sixth, cash discount does not appear in the books of account. False, completely false. Cash discount appears in the books of accounts as seller gives cash discount for the immediate payment by the buyer, है ना. सेलर क्या करता है? कैश डिस्काउंट देता है बायर को कि वो तुरंत पेमेंट कर सके. तो इट इज एन एक्सपेंस टू द सेलर. तो डेफिनेटली इट अपीयर्स एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेवेंथ, अ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विथ मनी और मनी इज वर्थ. डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है वो हमेशा मॉनेटरी वैल्यूज़ में ही होते हैं. नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होते. तो डेफिनेटली ट्रांजेक्शन विल बी कंसर्न्ड विथ मनी और मनी इज वर्थ ही ना. देन ओनली यू कैन एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. एथ,
अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज यही लैंग्वेज यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए कि बिजनेस फर्म के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, दूसरों को बताने के लिए. दूसरे मतलब कौन, आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल पार्टीज आप बोल सकते हो, सच्चे जैसे कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स. सो यू कैन से येस द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट द बिजनेस फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन टू आउटसाइडर्स और एक्सटर्नल पार्टीज सच एज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. ठीक है. 9th, in earlier times of civilization accounting was done by owners. False, completely wrong है, ये हमने already discuss किया है. Accounting was done by agents who manage the properties of wealthy people, है ना. manage agents करते थे वो, and they prepared accounts periodically for the owners of the property. So these are the reasons why the statement is false. Last but not the least, students, we have 10th one. Bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. The statement is true, children, because ये जो business transactions, I'll just read out the answer first. Business transactions classifications जो होते हैं transactions के is required to be is required to systematically find out all the tax liabilities. मतलब ये जो transactions होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं. यू हैव टू सॉर्ट दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हम क्लासीफाई करते हैं, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको टैक्स लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बुक कीपिंग आपने किया है. यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, राइट. सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स classifications is required to systematically find out all the tax liabilities, which is possible with the help of bookkeeping. That's why bookkeeping is useful to find out all the tax liabilities. ठीक है. So I hope all these solutions will definitely help you to understand the logic again and also revise. ठीक है. So that's it, children, in this video. In the next video we'll come up with more exercises of chapter 1, and we have almost finished with chapter 1 completely, and soon we will starting with the chapter number 2 for accounts. Okay. So that's it, children. Thank you so much. Thank you.